In the heart of Sindh, a story of transformation and empowerment emerges to mitigate gender-based violence and promoting sexual and reproduction health. But to understand the need for this intervention, we must look back at the devastating floods of 2022 in Pakistan, a catastrophe that not only destroyed infrastructure, lives, and livelihoods, but also left behind an immense healthcare void and giving rise to a surge in gender-based violence that affected millions. पोइ साल असांखे तमामु घणी तकलीफ़ आई ऐं बरसाति बि ॾाढी हुई सभिनी खे मलेरिया बुखार बि हुयो पताल परे आहे इलाही पंधा उन जे में असांखे मसइलो थी पियो सहूलियत न हुई रोड रस्ते जी इलाज जी असांजी उमेदवारी हुई मूंखे चौथो महीनो ॿार मुंहिंजो ज़ाया थी वियो हिननि चयो त तव्हां कोई बि ॿियो महिनत वग़ैरह न कंदो ख़र्च वग़ैरह न पियो ॾिए रोज़ तशद्दुद कंदो हुयो पोइ त मूंखे ख़बर पई इहे नशो बि कंदो आहे जब 2022 का फ्लड आया तो वहाँ जाके एक अजीब सी बेबसी थी हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें तो इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क ने UNFPA के ताउन के साथ हमने जो बहुत सारे गैप देखे वो सिर्फ हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं था उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो औरतें और बच्चियाँ थीं उनका जेंडर बेस्ड वायलेंस की तरफ से ज़्यादा वो वल्नरेबल हो गई थी प्रोन हो गई थी सिचुएशन ऐसी हो गई थी मैं जब खुद भी फील्ड में गई तो हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें जो सिर्फ एक चीज़ को ना एड्रेस करे बल्कि वो इस तरह से हो कि वो सारी इन टोटलिटी देखे जो उसमें उनकी हेल्थ को भी देखे जो उनकी प्रोटेक्शन को भी देखे जो उनको एम्पावर भी करे जो उनको स्ट्रेंथ भी दे जो उनको डिग्निफाइड भी करे तो हमने UNFPA के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कंसीव किया जिसमें सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे भी डाला और उसमें वुमेन गर्ल फ्रेंडली स्पेसेस बनाई Providing sense of security and protection to normalizing lives post-disasters, IHHN, with support from UNFPA, established women's and girls friendly spaces, where the vulnerable women are not only being given awareness sessions and psychosocial support, healthcare, referrals to essential life-saving services, but also being equipped with skills through training so they can get empowered, rebuild their lives, and emerge as respected members of their communities. जॾहिं मां इंडस जी टीम सां मिलियमि त मां उन्हनि खे हिकु पंहिंजो ॿियो मसइलो बि बयानु कयो उन्हनि मूंसां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं मूंखे दिली दिमाग़ी अहिड़ो सुकून मिलियो लीगल सपोर्ट जी तरफ़ां जेको असांखे मिली हेल्प हुनजे करे मुंहिंजो मुड़ुसु हाणे मूंसां सही आहे मुंहिंजे लाइ सभ खां वधीक ॻाल्हि इहा आहे त हुन मूंखे इजाज़त ॾिनी आहे मां हाणे पंहिंजी महिनत करे पंहिंजो गुज़र बसर करे थी सघां In addition to regular healthcare services and medical camps, a telehealth initiative was born, an innovative approach to address healthcare challenges of communities living in far-flung areas with no hope and access to healthcare. इंडस अस्पताल में आई सां कराची वारी मैडम वटि उन मूंखे चयो का 3-4 चकर कई सही कयसि मुफ़्त में कयसि दवा बि मुफ़्त में ॾिनसि दवा ॾाढी सुठी ॾिनई असांखे नंढड़ी ॼाई मूंखे नंढड़ी मुंहिंजी सही आहे मां बि सही आहियां At the heart of telehealth revolution were the unsung heroes, the lady health visitors, who traveled across challenging terrains, taking awareness and healthcare to the doorstep of anyone and everyone who needed it. मां हमवेल नर्स आहियां ऐं जेको आहे असां वटि हिकिड़ी टेबलेट आहे जंहिं ते जेको आहे असां पेशेंट खे ॾेखारींदा आहियूं ऑनलाइन डॉक्टर ॾिसंदो आहे जेकी उनखे बीमारी हूंदी आहे उहा ई जेकी दवा आहे असां वरी उन पेशेंट खे ॾींदा आहियूं HumWell, the digital health solutions partner, played a pivotal role in harnessing technology to connect patients with consultants miles away. The Telehealth initiative transformed lives by providing access to healthcare at the doorstep, empowering women, and revitalizing hope in these communities. हमवेल जे ज़रिए असां डॉक्टर सां ॻाल्हायो घर जे अंदरि ई असांजो इलाज थियो मुफ़्त ऐं जेको आहे सो दवाऊं मुफ़्त मिलियूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अॼु असां उन जे वजह सां सिहतयाब आहियूं इस सारे सफ़र में जो चैलेंजेस आए जो लेसन लर्न हुए उससे किस तरह सस्टेनेबिलिटी आए इन बच्चियों को किस तरह से हम ताकतवर बनाएं और ये किस तरह से सस्टेनेबल रहें हम हमेशा कहते हैं कि रीचिंग द अनरीच्ड
हम रीच तो कर गए, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए और ये सर्विसेज, ये एम्पावरमेंट, ये प्रिवेंशन वहाँ रह जानी चाहिए। As we follow the stories of Rashida, Najma, and Mrs. Z, we see numerous challenges. But most importantly, we see courage and change. Their stories are a testament to the resilience of the human spirit and the power of targeted interventions. IHHN's mission continues as each day brings us closer to a world where no woman or girl is left behind in the shadows of violence.